friends, welcome to my channel Views Factory. I'm here with you with another brand new video to share with you. Before I get into the video, I request you to kindly subscribe to my channel, share and like the video if you like the video, and also click the bell icon so that you are intimated first whenever I come up with a new video. Now, today's video is very interesting one, a very informative and a very happy one to do a reaction about, because India has, I think, struck one of the first big defense export deal today. Philippines has placed an order with India for supply of Brahmos missile for their navy. The deal is worth about $374 million. A big deal for Indian defense, a big day for Indian defense manufacturing industry. This video is done by a channel called World Affairs. They come up with some wonderful videos, very informative videos. I request you to subscribe to their channel. Also, I have given the link for the same below this video, so you can subscribe to their channel also. Now, before I go talk any further about the video, let's see the video, enjoy it, and then let's talk about the same. Yeah. नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। सो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मिसाइल एक्सपोर्ट डील अब हो चुकी है। फाइनल कंफर्म कर दिया फिलीपींस ने कि ये लोग पे करेंगे ब्रह्मोस एरोस्पेस को $374 मिलियन। एक्चुअली ऑलमोस्ट $75 मिलियन के आसपास का ये अमाउंट है। इंडियन रुपीस में ये हो गए लगभग 2,800 करोड़ रुपए। ये जो अमाउंट है इसका 51% मिलेगा इंडिया को, 49% जो है प्रॉफिट्स का ये मिलेगा रशिया को। और इस डील का अप्रूव होना मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि जो भी ये ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगे फिलीपींस के लिए ये इंडिया में ही बनने हैं। इंडिया ही इन मिसाइल्स को एक्सपोर्ट करेगा। आप कह सकते हैं इंडिया ही मेन ड्राइवर है इस ब्रह्मोस एक्सपोर्ट डील का। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है नोटिस ऑफ अवार्ड। ये वैसे साइन काफ़ी महीने पहले कर लिया गया था, मगर रिसेंटली इसको रिलीज किया गया है मीडिया में बाय फिलीपींस गवर्नमेंट। यहाँ पर आप देख पाओगे दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द प्रपोजल ऑफ ब्रह्मोस एयरस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक्विजिशन प्रोजेक्ट फॉर द फिलीपींस नेवी विद अ कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस प्रपोजल इन दी अमाउंट ऑफ, जो अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है करीब $374 मिलियन, ये एक्सेप्ट कर लिया जा चुका है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को कि फिलीपींस को इस मिसाइल से क्या फायदा होगा, क्या अमेरिकन सैंक्शंस का यहाँ पर डर है सिंस काटसा इन्वॉल्व है यहाँ पर, ये भी हम डिस्कस करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं चाहता हूँ आप सब लोग, ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में किस दिन में, और हो सके तो ये भी बताना कि इसको सेलिब्रेट करने का रीजन क्या है, क्या हमने उस वक्त अचीव किया था कि हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 11 मई, 6 जून, दिसंबर 5 या फिर जनवरी 5। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत से बहुत ही जल्द बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल्स ये पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे फिलीपींस को। अब इनकी डिलीवरी कब स्टार्ट होगी इसके बारे में डिटेल्स पता है नहीं, मगर मोस्ट प्रोबेबली आज के समय तो आपको पता होगा। ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया की वेरियस स्टेट्स में कर रहे हैं। रिसेंटली ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूपी में करने के लिए हमने यूपी में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ सालों में फिलीपींस को बहुत सारे ब्रह्मोस मिसाइल मिलने वाले हैं। और फिलीपींस में आपको ये बता दूं, चाहे साइज में देखकर आपको लगे कि टापुओं का एक ग्रुप सा है, एक ह्यूज कंट्री है, आसियान देश है, 11 करोड़ की आबादी है फिलीपींस की। उसके अलावा देखो, जब भी हम लोग इंडिया में बात करते हैं ना ब्रह्मोस सेल के बारे में, तो सीधा माइंड में आता है चाइना। चाइना को जवाब दे दिया, चाइना को इससे टक्कर मिलेगी। तो देखिए, बिल्कुल चाइना को तो ऑब्वियसली इससे थ्रेट महसूस होगा। ठीक है, फिलीपींस के पास जब ब्रह्मोस आ गया है तो जो साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट है वहां पर चाइना नर्वसनेस महसूस करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है फिलीपींस का क्लेम साउथ चाइना सी में। फिलीपींस सारे स्पार्टली आइलैंड्स को क्लेम करता है। फिलीपींस आप अगर देखें तो वियतनाम के बाद दूसरा देश है जो चाइना के क्लेम को डायरेक्टली काउंटर करता है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, फिलीपींस का यहाँ पर डिस्प्यूट ना सिर्फ चाइना के साथ है, वियतनाम के साथ भी है। और वियतनाम भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड है। फिलीपींस के बाद पॉसिबिलिटी है कि वियतनाम को भी हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचेंगे।
तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कैसा लगता होगा अमेरिकन को जब वो खुद देखते होंगे कि उनकी गवर्नमेंट यहाँ पे जो डिस्प्यूट्स हैं उनका एडवांटेज लेकर मिसाइल्स यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रही है। बट दिस इज जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। हम सबको ये पता है कि फिलीपींस मोस्ट प्रोबेबली ब्रह्मोस को वियतनाम के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेगा, वियतनाम भी फिलीपींस के अगेंस्ट नहीं यूज़ करेगा। अगर ब्रह्मोस का भी यूज़ होता भी है तो ये चाइना के अगेंस्ट ही यूज़ करने वाले हैं दोनों देश। और अभी तो देखिए ब्रह्मोस सिर्फ फिलीपींस ने लिया है ना, उसके बाद वियतनाम, फिर ब्राज़ील, कई और देश हैं। मेरा मानना है कि ब्रह्मोस को ही बेच कर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेगा। और सिंस यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है फिलीपींस इंडिया डिफेंस सेल रिलेशनशिप की, तो उसके बाद अब पॉसिबिलिटी है कि 2028 तक हम और भी बहुत कुछ फिलीपींस को बेचे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर मैं इतनी छोटी से कैसे कह सकता हूँ कि फिलीपींस परचेज करेगा ही, क्या पता इनके पास बजट ना हो। देखिए बजट है फिलीपींस। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पर, फिलीपींस का एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट है यूएसए के साथ। इसको कहते हैं म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी बाय यूएस एंड फिलीपींस। अब आप सोच कर देखिए एक कंट्री को जब वरदान दिया गया हो कि कल को कोई भी आप पे अटैक कर, तो माना जाएगा कि यूएसए पे अटैक हुआ है, वो देश अब ब्रह्मोस मिसाइल क्यों परचेज करेगा? रीजन देखिए यहाँ पर यही है कि चाइना का थ्रेट बढ़ता जा रहा है और यूएसए पर कंट्रीज डिपेंड करना चाहती नहीं है। जापान के साथ भी सेम केस है, जापान के साथ भी यूएसए का डिफेंस पैक्ट है, तब भी आपने देखा है कि जापान का जो डिफेंस बजट है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यूएसए पर कब तक डिपेंड कर लेंगे। आज से 10 साल बाद चाइना एक जो विराट रूप लेगा, इनकी जो नेवी है काफ़ी डेवलप कर पाएगी, तब यूएस अकेले चाइना से नहीं बचा पाएगा। इन कंट्रीज के पास खुद भी कोई वेपन्स होने चाहिए ताकि इनिशियली कुछ रेजिस्टेंस दे पाए चाइना को। तो इसलिए इन लोगों ने डिसाइड ये किया, फिलीपींस के लोगों ने डिसाइड ये किया कि 2028 तक मॉडर्नाइज करेंगे अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को। इसके लिए इन्होंने सेट असाइड कर लिया है $5.6 बिलियन का अमाउंट। ये जो अमाउंट है ये इस तरीके से बांटा जाएगा, 2.6 बिलियन होंगे एयरफोर्स के लिए। तो मैं ये भी कहूँगा इन द फ्यूचर हो सकता है कि हम तेजस भी एक्सपोर्ट करें यहाँ पर फिलीपींस को, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। 1.4 बिलियन है नेवी के लिए, इसमें से 1.4 में से ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 400 मिलियन के आसपास तो ब्रह्मोस ले गया। उसके अलावा भी काफ़ी स्कोप है, अभी हम सबमरीन एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिलीपींस को, 1 बिलियन का इनका और अभी यहाँ पर कोटा बचा हुआ है, तो उसमें से भी कुछ मिलियंस इंडिया की तरफ आ सकते हैं। फिर आखिरी है 890 मिलियन फॉर दी आर्मी। यहाँ पर भी काफ़ी स्कोप है आर्मी के लिए। आपको पता है इंडिया आज के समय राइफल्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, हेलमेट्स, एम्यूनेशन, बहुत टाइप का इक्विपमेंट इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ डील्स हो सकती हैं। और देखिए इतिहास को आप अगर देखो डिफेंस डील्स का, तो यूजुअली क्या होता है कि जब एक बड़ा देश एक कोई मिलिट्री आइटम को परचेज करता है तो उसके बाद बाकी कंट्रीज एक के बाद एक ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिलीपींस के बाद बाकी जो 9 आसियान कंट्रीज हैं, ये भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर इंडिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स परचेज करे। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं मगर इंडिया से ही क्यों परचेज करेंगे? देखो इंडिया से इसलिए परचेज करेंगे क्योंकि चाइना के साथ तो इनका डिस्प्यूट है, ठीक है। यूएसए के पास जाएंगे तो यूएसए इनको सॉफ्ट लोन की फैसिलिटी देता नहीं है। इंडिया ने यहाँ पर समझदारी ये करी है, इन कंट्रीज़ की जो लिमिटेशंस है उनको भी समझा है। फिलीपींस के साथ जो ये डील करी है, इसके पीछे इंडिया का एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक ये है कि हमने $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रखा है फिलीपींस को। इसका मतलब ये है कि जो ये पूरी डील है $375 मिलियन की, इसमें से जो 100 मिलियन है ये फिलीपींस को इमीडिएटली पे करने की आवश्यकता नहीं है, किस्तों में पे कर सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक, और इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हद तक लो होगा इस सब में। तो इंडिया यही करने वाला है, लाइन ऑफ क्रेडिट। इंडिया की जो डिफेंस फॉरेन पॉलिसी है इसमें क्रिटिकल रोल होगा। हम इंडोनेशिया, उसके अलावा वियतनाम, वेरियस कंट्रीज को कह सकते हैं कि ये लीजिए 200-300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एंड बाय इंडियन मेड डिफेंस प्रोडक्ट्स। देखिए हमें कोई नुकसान है नहीं। जो अमाउंट मान लीजिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिल रहा था करीब 1 साल में, 2 साल में, वो मिलेगा 7-8 साल में। बट डिफेंस डील्स तो आपके पास आ रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, इंडिया में हम जॉब्स तो क्रिएट कर रहे हैं। और देखो जब बाहर की कंट्रीज डिमांड करती है और आप उनके लिए मैन्युफैक्चर करते हो तो आपके देश में भी इनोवेशन और ज़रा जागती है। आप सोचते हो कि ये जो प्रोडक्ट है हम ऐसे भी बना सकते हैं, इट कैन बी बिल्ट इन दिस वे एज वेल। इससे और ऑप्शंस ओपन होती हैं। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा अच्छी शुरुआत है। और सिंस फिलीपींस MTCR का मेंबर नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर नहीं है, तो फिलीपींस को हम 300 किलोमीटर के ऊपर की रेंज का ब्रह्मोस एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो एक्सपोर्ट वेरिएंट फिलीपींस को मिलने वाला है ब्रह्मोस का, इसकी रेंज होगी एट मैक्स 290 किलोमीटर्स, जो काफ़ी है।
क्योंकि ये एंटी शिप वेरिएंट ले रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मोस का। इन लोगों का मेन टारगेट होगा चाइना की फ्रिगेट्स, चाइना के डिस्ट्रॉयर्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट से आप देखो, ये बात अब फोटो है, इस तरीके से फिलीपींस यूज करेगा ब्रह्मोस मिसाइल को। इस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो 290 किलोमीटर्स रेंज इज मोर देन इनफ फॉर देम। नाउ अब हम आते हैं कार्सा एक्ट पर, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इस एक्ट में आप सबको पता होगा, यूएस ने दुनिया को ये कहा है कि जो रशिया से लेगा वेपन, उन पे लगाएंगे हम सैंक्शंस। इंडिया पे सैंक्शंस अभी तक बाय द वे लगे नहीं है, इवन तो हमने S-400 रशिया से परचेज कर लिया, मगर कई और डील्स हैं। फॉर एग्जांपल कमाओ हेलीकॉप्टर की डील, वो यूएस ने कैंसिल करवा दी इन सैंक्शंस की वजह से। तो क्या ब्रह्मोस मिसाइल में ऐसा हो सकता है? देखिए नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल के इशू को लेकर यूएस काफी क्लियर है कि सिंस ब्रह्मोस मिसाइल को एक ऐसी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है जिसका मेजॉरिटी स्टेक इंडिया के पास है, तो इसलिए कार्सा सैंक्शंस यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। तो इसलिए फिलीपींस भी काफी हद तक टेंशन फ्री है। और ये देखो, रशिया के लिए भी एक बहुत ही अच्छा पैसा कमाने का मॉडल है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके हम लोग वेपन्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू अफ्रीकन कंट्रीज, आसियान कंट्रीज, इवन मैं कहूँगा साउथ अमेरिकन कंट्रीज इन द फ्यूचर। क्योंकि इंडिया के साथ आप अगर कंपनी ओपन करते हो तो वहाँ पे सैंक्शंस का खतरा होगा नहीं। मैक्सिमम इनको यही करना है कि प्रॉफिट का जो लार्जर पोर्शन है 51% ये दे देना इंडिया को, और बाकी पोर्शन ये खुद एंजॉय कर सकते हैं। ये रशिया के पास एक काफी अच्छा ऑप्शन है कंपेयर टू नॉट बीइंग एबल टू सेल एनी डिफेंस इक्विपमेंट एट ऑल। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 1998 11 मई को हमने पोखरान टेस्ट किए थे, तो इसी वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में। और फाइनली आप Yes. Wow, that was a very nice video. I mean, feel very proud after seeing the video. I should say India has, been broken into the defense industry with this deal. This particular Brahmos has been under development for a very long time. There were a lot of hiccups in between and things like that. It's a joint venture between India and Russia, where India holds 51% of the stakes. And it's jointly developed by India and Russia, but completely produced and manufactured in India. They are coming up with a factory in Uttar Pradesh, as per the newspaper reports, so it should come up very fast. The best thing is, instead of earlier, a couple of decades back, India always used to maximum look at, making something for their own army, navy, and air force. But now, in the last couple of years, especially, there's a lot of focus on Make in India, and then making sure that the product has a worldwide area to sell. They're looking for buyers from multiple places, multiple locations in the world, and that's something which is very good. India, with the Make in India program, see, most of these projects, most of these products which India has come up, like Brahmos, and then there is something landmark thing called Tejas. All these are being not developed in the last couple of years. It's been under development for a couple of decades, and it has evolved over a period of time. It's gone through a lot of problems of sanctions from multiple countries and things like that, and then evolved itself to be a world-class product. Now, with this current government in place and an aggressive export policy of India and the Make in India policy, India is finding buyers from outside. Now, let's come to this particular area called ASEAN. We'll go a little bit into what is the current scenario there in ASEAN. ASEAN and South China Sea is a boiling area of problems. China is in a total expansionist mode. See, there are these 9-10 countries in ASEAN region. They have a lot of dependence on the sea for many of their resources, including fisheries and a lot of things, because sea is something which is common for everybody. Now, China is saying that the entire area belongs to them, including the Spratly Islands. Everything belongs to them. So, that doesn't make any sense. China, for that matter, has disputes with more than 30 countries, border disputes with territory disputes with more than 30 countries, including Russia. That's the way China goes. They are into total expansion mode, and that's not a healthy way to behave with neighbors, friends. No, I think that is a very aggressive way.
what happened is in the last few decades, because of the economic growth of China, they have also invested heavily in modernizing their forces. Now, when China has a very advanced, defense force, they have started threatening countries in the ASEAN region, with frequent flypast by their aircrafts and then navy expansionism and things like that. So all these countries are feeling a little bit worried about it. They know that they can't fight China, just like that, because they are huge. China is huge. So what happened is there are countries like Philippines and Japan, earlier, as mentioned in this video. They had made, during the Cold War era onwards, they had made pacts with Americans saying that, any attack on their country is considered as an attack on the US and they will come to support. Now, what happened is during the earlier days, the activity of Americans in this region also was very high. So the response time for anything would be very short. Now, with the changed scenario, geographical, where defense is, focused on, what happens is the countries know that maybe America might come to their help in case of a problem, but then the response time would be a little bit more. So response time is something wherein these countries do not want to have any problems. So what happens is earlier they used to spend minimal on their defense. Now they have, like Philippines, they have said, they also, all of them are investing a little bit more in upgrading their defense forces, so that that at least the initial defense is given by these countries to China. Now, this Brahmos is a time-tested missile by India, in the sense it's the best in the class. If you see any of the defense journals and websites which is dealing in defense, you will know that in this category, Brahmos is the best. It's India is selling Brahmos with range less than 300, that's 290 or something. But Brahmos has multiple variants wherein there's a much more bigger range also, but we can't sell it to countries who have not signed the MTCR. So Philippines is not signed, so we are selling Brahmos, which has a range of less than 300 kilometers. It's got a speed of 2.8 Mach, which is really high speed, and technically Brahmos is the best in the range. So that's been proved again, because India has been pitching to sell this Brahmos to multiple countries, right from South American to African to ASEAN, and a range of European. There are a range of countries to which India has tried to pitch to sell this. And the major thing about ASEAN selling to Philippines is that it opens up a huge market of ASEAN, because if Philippines goes in for a deal like this, definitely the other countries who are already evinced interest, like Vietnam, Cambodia, Thailand, Indonesia, these countries also would be following suit very soon, because they would want to upgrade their defenses as well. So that's something which opens up the market for us. And along with this happening, the Brahmos part happening, India is also upgrading the rest of the defense protection mechanisms. Like, I'm sure that everybody would be aware that India has tied up with Kalashnikov to make their rifles, and their latest rifles in Uttar Pradesh in India. So that's going to be a huge factory wherein they could make for the world. Tejas is an aircraft which has been under development for decades, and it was a brainchild, or I wouldn't say brainchild. It was a pet project of Rajiv Gandhi, and then it's evolved over a period of time. It's gone through times wherein India had to face restrictions from countries like US and all after the nuclear testing and things like that. So it's gone through all that and evolved as a world-class product. Today, Tejas is a world-class product in its class, and India is doing everything possible to make sure that it stays as the top-notch with the top-notch technology. India is also working on other types of aircrafts also, which would be coming to the defense market very soon, as and when it is getting ready. So India is determined to enter this multi-billion-dollar defense industry and do well. So that's something which is very great. India is also, other than this, India is also, I think, trying to pitch for Tejas supplies to a country like Argentina, which is far away.
Argentina is a country wherein everybody has tried to, most of the countries had tried to sell their aircrafts to them, fighter aircrafts to them, but couldn't succeed because, most of the fighter aircraft engines or the ejection seats, flight ejection seats are made by UK, Britain. And like CATSA, they also have certain things wherein they put restrictions on exporting it to Argentina because of their past with Argentina with the Falkland War and things like that. So many of the countries couldn't do it. Now India stages also faces the problem of only the ejection mechanism, which is done by UK. But India is coming up, is working on coming up with a indigenous ejection system, which hopefully, if it is approved by Argentina, and definitely India is going to put a lot of effort into it to make it a world-class one. So once that is done, then those deals also will be coming through. India is also one major thing which we should understand is that China has grown really big because of its economic might. But these countries in ASEAN, they don't have that economic power to match China. So what India does is, India uses its good diplomatic offices to offer line of credit, soft loans to these countries who can't afford to just buy off the shelf, pay and buy it off the shelf. So we'll give them the loan where they can repay it in over a longer period of time with much lesser interest than the market rate. So thereby India is having a hold on those defense deals. So we can expect to see a lot to happen in the ASEAN region in the next coming couple of years. Along with that, we'll see a lot of new products also being developed in India, maybe with technological collaboration with countries like Russia and Israel. Israel is actively cooperating with India in mass producing a lot of things. So we can look for a lot of activity in this billion-dollar industry. I hope you liked today's video. I was particularly impressed with the kind of research what Mr. Prashant has put into this video, and try to make it a very informative one. Yeah. So if you liked this video and if you liked my reaction towards this video, kindly like the video and share the video with your friends and relatives. And if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to the same, because I intend to bring a lot of new videos, possibly on a daily basis or a frequent basis to you. So also request you to kindly click the bell icon so that whenever I come up with a new video, you are intimated first and you could see and watch and enjoy the new videos. I look forward to seeing you on one another video very soon and enjoying with you. Thank you for your time. Have a good day.